must be presented before the nearest magistrate within 24 hours. It means if you are arrested within 24 hours of the time of arrest, you must be presented before a nearest magistrate only. You can be kept beyond 24 hours with the permission of the magistrate. Protection against arbitrary arrest and detention. And this is which article? Article 22. So in bracket you write Article 22. Arbitrary arrest and detention. Right? Article 22. Now, look here. What does Article 22 has to say? First, how many clauses in Article 22? Article 22 goes from clause 1 to clause 7. So there are these many clauses in Article 22. First, we'll discuss about Article 22, clause 1, clause 2 and clause 3 because they together make sense, whereas Article 22, clause 4 to 7 make sense together. Now, what does Article 22, clause 1 says? It says that if anybody is arrested, then as soon as possible that person should be informed why he is being arrested. It means he should be informed about the grounds of his or her arrest. Do you understand that? And then Article 22, clause 1 also has a second part which says that all arrested people should be given the opportunity to defend themselves by a lawyer of their choice. Do you understand that? Consult a lawyer and defend through a lawyer. Do you get that? And it is a fundamental right. If you are arrested, then you must be informed immediately why you are being arrested. Got it? First. And secondly, you must be given the opportunity to defend yourself by a lawyer of your own choice. Got it? By the way, what is the difference between a lawyer and an advocate? Have you heard about these terms? Lawyer, barrister, advocate. क्या फर्क होता है? Are you sure? Then what is Supreme Court's advocates on record? Yes. Appointed. Guess मत करो. क्या फर्क है लॉयर, एडवोकेट और बैरिस्टर में? देखो, a lawyer is any person who has studied law, becomes a lawyer. Like जैसे इंजीनियर होता है, डॉक्टर होता है, वैसे लॉयर होता है. The only thing is you have to study law. You become a lawyer. Anybody who has studied law here? पढ़ा भी होगा तो भी बदल देंगे. Second is advocate. Advocate is that lawyer who has registered himself or herself with the Bar Association. And only advocates can plead before a court of law. Do you understand that? So that is advocate. And who is a barrister? A barrister is a person who has studied law in England. That is a barrister. Like Gandhiji was a barrister. Got it? यही फर्क होता है बस. ठीक है? तो देखो, Article 22, Clause 1, what does it say? It says that if you are arrested, then you must be informed about the grounds of your arrest. And secondly, you must be given the opportunity to defend yourself by a lawyer of your own choice. Article 22, Clause 2, it says what? It says that the time where you are arrested or the time at which you are arrested, counting from that time, you must be presented before the nearest magistrate within 24 hours. It means if you are arrested within 24 hours of the time of arrest, you must be presented before a nearest magistrate only. You can be kept beyond 24 hours with the permission of the magistrate. However, this 24 hours excludes the time that is necessary to take you from the place of arrest to the office of the magistrate. It means the time lost in traveling, वो नहीं count होगा. Got it? ये तो समझ लो कोई पहाड़ के पीछे ऐसे किसी को अरेस्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ आते आते ही 24 hours हो गया, वो बोलेगा okay टाटा बाय, मैं जा रहा हूँ. There is no magistrate. Do you understand that? So the time taken in traveling is not included. Article 22, Clause 3 says that these rights will not be available to aliens, enemy aliens. Remember that? Enemy aliens and people who are kept under the law of preventive detention. Interest. Now that is Article 22, Clause 1, which says that you must be informed of the ground of your arrest and you must be given the chance to defend yourself by a lawyer of your choice.
Article 22 clause 2 says that you must be presented before the nearest district magistrate within 24 hours counted from the time of your arrest, excluding the time which is lost in traveling. So write the text of Article 22 clause 2. Quasi criminal means पूरी तरीके से तो क्राइम नहीं है ये, लेकिन उसमें कुछ क्रिमिनल एलिमेंट है. Like say for example that you were driving your car, suppose very fastly you were driving your car, right, and you have accidentally hit someone, but the person that you have hit, you felt that you have hit a person, but you have not hit a person. Suppose you have hit a pole. Do you understand that? Now that pole has fallen and it has hurt a person. So it's indirect ho gayi cheez. So we can say partially. It's not directly, you did not intention it to do. Do you understand that? ऐसा हो सकता है, मतलब पूरी तरीके से क्राइम नहीं है ये, बट क्राइम से कम भी नहीं है, सिविल ऑफेंस तो नहीं है. Got it? I'm just saying that if the pole has fallen, right? आपने ये नहीं सोचा था कि पोल पे जाके गाड़ी दे मारूंगा, ऐसा तो नहीं सोचा था, आपसे लग गई, ठीक है, अब वो पोल गिर गया उसके ऊपर, लेकिन रैश ड्राइविंग तो आप कर रहे थे ना, बस. और रैश ड्राइविंग करना क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सिविल ऑफेंस है. किसी को हिट कर, अगर समझ लो आप गाड़ी चला रहे हो और आपने किसी को मार दिया सड़क पे, तो क्या आपको जेल हो जाएगी? समझ लो आप गाड़ी चला रहे हो and in an accident you hit someone and that person dies on the spot. Will you go to jail now? What do you think? No, you will not go to jail. Under the Motor Vehicle Act, you will not go to jail. When you will go to jail, do you know? When you will run from that spot. क्योंकि उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर आपने किसी को मारा है तो आपको हेल्प करना पड़ेगा उनको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए. अब अगर भाग जाओगे, हिट एंड रन होगा, then you will go to jail. The point here to be noted is कि अगर आपने किसी को, देखो पहली बात तो ये कि there are speed limits. What is the speed limit by the way? कभी ध्यान दिया है? क्या होता है? ये मेन रोड पे कितना स्पीड लिमिट है? ये मेट्रो के साथ जो सड़क है इस पे क्या लिमिट है? 50. आर यू श्योर? सोचो, स्पीड लिमिट भी नहीं मालूम. हाँ, अच्छा, हाईवे पे स्पीड लिमिट इतनी क्यों रहती है? क्यों रहती है? एक्सप्रेस वे, हैव यू सीन दैट? क्यों रहती है इतनी स्पीड लिमिट? अच्छा, ओके, आई गॉट इट. व्हाट एल्स? ये और क्या बताओ? एक लॉजिकल पॉइंट है, बताओ. इफ यू हैव ट्रेवल्ड थ्रू एक्सप्रेस, हैव यू सीन द यमुना एक्सप्रेस वे? हाँ, चलो बताओ, एक लॉजिकल पॉइंट है मोस्टली एक्सप्रेस वे में, दैट यू हैव यू सीन द ट्रैफिक सिग्नल्स? हाउ मेनी सिग्नल्स ऑन द रोड? देयर एट almost zero or at very distance, right? And accidents are always when stop and start. अच्छा, समझ के देखो, दो गाड़ियां जा रही हैं और दोनों 150 की स्पीड में जा रही हैं, कभी नहीं टकराएंगी. एक अगर बीच में ब्रेक मार दे तो तब होगा इश्यू, ठीक है? ये एक रीजन. दूसरा, एक्सप्रेस वे पे जो फीडर रोड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं. Have you seen? They are like this. Means you come like this. And there is proper mechanism, yellow line, and have you seen those solid lines and all those kind of things? और यहाँ पे रोड ऐसे होते हैं 90 की मोड़ पे, ये यहां से आ रहा है, ये भी हॉर्न बजाता है, ये भी हॉर्न बजाता है, दोनों टकराते हैं. रुकना किसी को नहीं है, हॉर्न बजाना बस है, बस वो पता है कि हॉर्न बजा देना है, तो हॉर्न बजा दिया और फिर आगे निकल गया. ठीक है, तो ये भी बहुत सारे रीजंस होते हैं. दिस इज ट्रैफिक बिहेवियर. ट्रैफिक बिहेवियर इज अ सिविक वर्च्यू. समझ में आया? अरे इंडिकेटर दे के टर्न नहीं लेते हैं, वो और बड़ी बात है. और इंडिकेटर दूसरा देते हैं, इधर मुड़ जाते हैं. Seen someone who is doing like this, given the indicator and showing the hand on this side, right? And then he got into an altercation with a person. He said कि मैंने वही इंडिकेटर दिया था, गाड़ी में गड़बड़ है, इधर वाला जलता है. क्या बोलोगे? So you write Article 22 Clause 2. Let's write this one first. Yes.
हम्म, 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 पुलिस ऐसी गलती करेगी ही नहीं। नहीं देखो, पॉइंट ये है कि आपको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता बिना अरेस्ट वारंट के, यस और नो? नहीं नहीं, आप टाइम छोड़ दो, मैं उससे भी बेसिक क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अरेस्ट वारंट के बिना आपको अरेस्ट किया जा सकता है क्या? कैन यू बी अरेस्टेड विदाउट एन अरेस्ट वारंट? नो, बट जस्ट डू दिस सोशल एक्सपेरिमेंट, go and purchase a police dress, wear that and go to the neighborhood and just do this. पुलिस देखो, आधे से ज्यादा लोग घबरा जाएंगे, कोई नहीं चढ़ के आएगा आपके पास। यहां पे आपने देखा है ट्रैफिक पुलिस पे भी जो खाकी वर्दी वाला होता है वो चालान काट देता है। इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट अलाउड। एंड यू आर सेइंग दैट दे आर नॉट नोटिंग द टाइम। If an aware person can obviously drag the police then. Yes, can drag the police, but generally good officers will not do that, right? वो petty कुछ होता है जिसमें पकड़ते हैं और 24 घंटा रखते भी नहीं है, 12 घंटे बाद छोड़ देते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो समझ लो उन्होंने टाइम नोट नहीं भी किया, लेकिन एक अंदाजा लगाया कि 12 नहीं तो 13 हो गए होंगे, 24 तो नहीं हुआ होगा। So it's not necessary that they keep for 24 hours. Have you seen that when there are fairs or some sort of public gatherings, at that time there would be some anti-social elements जिनको पकड़ लेती है पुलिस? आपको क्या लगता है इतने सारे लोगों को मैजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे, वो 10-12 घंटे बाद प्रसाद देके छोड़ देते हैं। सिराइडा No, it contains approximations. Approximation. Yes. No, this what is this? This is accident. Do you understand that? It was not intention. The intention was not to kill. But अगर आपने बिल्कुल जैसे वो बॉलीवुड की मूवीज में नहीं दिखाता था कि रात को जैसे हीरो जा रहे तो ट्रक की लाइटें जल गई, अब ट्रक आ रही है पीछे, फिर वो हो जाएगा, फिर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ। If it's accident, obviously you cannot be held, right? You did not do this intentionally. Intention matters in law as well as in